A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome, namaskar, swagatam. Today is a historic day, and it's a privilege to be sitting here watching it live as you do in homes and hearts all across this country and all across the world. India's Parliament building with 1,272 seats is being inaugurated in a few short moments, and we will be covering this live through the course of the day. Let's get started with as much energy and enthusiasm as we can bring forth, because it is going to be one heck of a day. Manohar Kesri, my colleague, is joining us live. We also have a huge list of guests who are joining us live this morning as we get ready for our new Sansad. Manohar ji, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एज एन इंडियन. आपने कितने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट से, ये विजय चौक से. आज बिल्कुल नज़ारा, दृश्यम सब कुछ बदलने वाला है. कैन यू शो अस अराउंड मनोहर? लेट्स हैव अ लुक अप एंड डाउन व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द माहौल कैसा है वहाँ पर अभी? बिल्कुल, और आज ये शुभ घड़ी है और वो घड़ी आ चुकी है. मैं आपको सीधा नज़ारा दिखाता हूँ. ये देखिए, ये विजय चौक है और आप संसद भवन देख सकते हैं. जो गरजता हुआ शेर है वो साफ दिख सकता है. जो नेशनल एम्बलम है वो है पार्लियामेंट है. और आपको यहाँ का मूवमेंट मैं दिखाता हूँ. ये आप देखिए, अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहेंगे, ये जो काफिला है तमाम मिनिस्टर्स के, एमपीज के, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं. सभी लोग सीधे नए पार्लियामेंट पहुँच रहे हैं और लोकतंत्र के इस नए मंदिर का आगाज, शुरुआत और अभी कुछ देर बाद हो जाएगा. 7:15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं. उससे पहले यहाँ पर सभी नेता, मिनिस्टर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जो भव्य लोकतंत्र का मंदिर है कई मायने में खास है. पब्लिक फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, टेक्नो फ्रेंडली है और तमाम जो सांसद होंगे वो फ्रेंडली है. सबसे बड़ी बात है कि जब 7:30 बजे इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी, जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इसको जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तो 7:30 बजे हवन पूजन से शुरुआत होगा. एक नज़ारा आपको और दिखाता हूँ. ये आप देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है. हर जगह ट्रैफिक पुलिस है और इस एरिया से, जो विजय चौक से जुड़ा हुआ तमाम सड़कें हैं, सबको ब्लॉक कर दिया गया है. सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जिनके पास इनविटेशन कार्ड है. और सेंगोल की खासियत है, जिस प्रकार से कल रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तमिलनाडु के अधिनम से जिस प्रकार से मुलाकात की, उनको भेंट दिया गया, पीताम्बर भेंट किया गया. और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले कल के लिए ये धर्म, निष्ठा और सत्य की राह पर चलने वाले तमाम जो जनप्रतिनिधि इस नए संसद भवन में आएंगे, उनके लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत होगा. क्योंकि ये धर्म निष्ठा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, सदियों से चला आ रहा है. तमाम विशेषज्ञ इस चीज को कहते हैं. और एक बात और मैं बता दूं, जब फ्रीडम एट नाइट जब बुक लिखी गई थी तो उस बुक में भी इस सेंगोल का जिक्र है. उन्होंने बताया था किस प्रकार जब सत्ता हस्तांतरित हुआ था तो उस समय सेंगोल दिया गया था. There is going to be plenty of conversations, Manohar, that have already had about the symbolism. You're watching a live shot, ladies and gentlemen. This is, of course, Kartavya Path, which was inaugurated. This is just at the bottom of Raisina Hill. This is what we call Vijay Chowk, the Victory Square. This is where the beating of the retreat ceremony takes place every year. And this is the spot as you pan, and let's put the geography right. The new parliament is exactly next to the old parliament. I mean, literally it's the compound are absolutely adjacent to each other. So which is of course at a later time. So you can see the old parliament right behind the new parliament. The building is roughly of similar dimensions. The new parliament is of course substantially larger in terms of both volume and just square footage inside, but the triangular shape is roughly of the same dimensions. Remember, the old parliament when it was built was roughly 1 kilometer in circumference. So this is going to be slightly larger. You can see, of course, high security early morning, and we are expecting the Prime Minister to be arriving very, very shortly. Manohar, बाकी सारा छोड़िए, आपको कैसा लग रहा है आज? ओके मनोहर, आई एम होपिंग आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ सुनते रहेंगे. आपसे मैं सवाल कर रहा था कि आपको कैसा लग रहा है?
देखिए बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक क्षण है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि राजपथ कर्तव्य पथ बना और इंडिया गेट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरी तरह से बदलाव किया गया, कई सौंदर्यीकरण किए गए, कैमरे लगाए गए, लाइट लगाई गई और उसी तरह आज भव्य समारोह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और सिर्फ इस समय ही नहीं बल्कि जो गौरवान्वित एक महसूस कर रहे हैं क्योंकि पूरे भारत के लिए प्राइड का गर्व है, 140 करोड़ जनता के लिए है, क्योंकि इसमें कई खास बातें हैं। हमने देखा कि अपर हाउस और लोअर हाउस को जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है वो अमेजिंग है। उसको देख करके कोई भी कहेगा कि हमारा जो नेशनल फ्लावर्स हैं, नेशनल बर्ड हैं, उनका उसमें पूरी डिजाइन को उकेरा गया है, उनकी कलाकारी। सेंट्रल हॉल की अगर हम बात करें, सेंट्रल हॉल को भी खास तरीके से डिजाइन किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, क्योंकि वहां से 3 गेट जाता है और उस 3 गेट से आप लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है एज ए इंडियन कहा जाए तो। इसकी जो बनावट शैली है, जिस प्रकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है, और आपको एक नज़ारा और दिखाता हूं, ये आप देखिए गाड़ियों का कारवां, मिनिस्टर्स की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रहे हैं, तमाम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और उसके बाद 7:30 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। Okay, just a reminder to our viewers, we're going to keep these live shots on air. We're going to also show you the shots of inside Parliament, which of course are well known. Yeah, have a look at that. So there's scaffolding there. That scaffolding is there to, of course, provide access. I don't know why this PCR ये आपका जो wipe है ना, इसको छोड़ दीजिए आज आप, ठीक है? Live shots रखते हैं. Let's have a look. So the scaffolding there on the right side of your screen, that is to provide access to that statue which has been put there. The scaffolding, of course, is not going to be permanent, so you're not going to see stuff there. That statue is going to be lit up from tonight. It's going to look something impressive, and now the old Parliament is much more easily visible from the streets. But the new one, there's been a lot of construction work going on, so it's behind the trees. So this is the best shot we can get you from Vijay Chowk this morning. We're going to try to keep that shot in the center of your screens. We're also going to put out some shots for you of what the Parliament building looks like. Shekhar Vijayan joining us this morning. Sandeep Chandra also joining us this morning. We have a whole bunch of guests. Sunil Diore, who's the sculptor, of the man who's actually built that statue on top, the emblem, the 4 lions from Sarnath. He's also going to be joining us this morning. Sanjeev Balyan, Union Minister, quickly is going to sit with us. We're going to find time with him either before or after the ceremony. I'm expecting Pandit Acharya, who is been the former Secretary General of the Lok Sabha Secretariat. He's also going to be joining us. Hopefully, we're going to get a few members of Parliament as well, and from some former governors. So we're going to have as much of an interesting time as possible. 7:15. So in about a few minutes' time, 5-6 minutes' time, the Prime Minister is expected to arrive. After which they have a Mahatma Gandhi Pandal that has been set up where they're going to be, there's going to be puja. Then the actual ceremony of this Parliament, these are actual shots. This is no longer visualization or animation. These are the actual shots of what the Lok Sabha is going to look like. Fascinating peacock framed Lok Sabha. 888 seats, so large enough to hold a joint session of Parliament. Central Hall has been done away with, as you're probably now already aware. Rajya Sabha has got a lotus theme going on, so absolutely fascinating. At about 9 o'clock, this actual inaugural part will start. So it will be 1.5 hours of puja that's going to take place. Then at 12 o'clock, there will be the first time the national anthem will be played from inside the Parliament building. And we are, of course, expecting members of Parliament to attend. Some of them are choosing to miss out today for political purposes, best understood by their political parties. To the best of my knowledge, the vice chairman of the Rajya Sabha, the deputy speaker there, is also going to be reading out a message from the president and the vice president. And Om Birla, the Lok Sabha speaker, who is technically the host of today's ceremony, will be also making a speech at about 12:30. And at 1 o'clock, Prime Minister Modi will be inaugurating a special ceremonial coin
and I think there's probably be a postage stamp release also. Worth saving up, procuring one and saving it for the kids. And we are expecting a few minutes after that, at around 1 o'clock or just past 1 o'clock, the Prime Minister to address the country as well. We'll be, of course, showing this telecast in toto to you in prime time tonight. So that's when you're watching it. Well, this is how as it happened. Sandeep Chandra, how are you feeling this morning, sir? I'm good, and it's lovely to be on your iconic channel. Good morning to you. Is my voice clear? Yes, it is, sir. Yeah. So you see, I am feeling very happy as a citizen of this country, and this is the most defining moment after the independence of the country, and also on Amrit Kal, we are celebrating Amrit Kal, and I would like to say that it is not a coincidence that in Prime Minister Modi's time, this is being inaugurated. What is of more importance is this, that it has been done in record time, and it took Mr. Modi's government to have this new parliament building, which was long overdue. This is a gift of the Prime Minister to the citizens of this country. We all feel very proud. When foreign dignitaries come, they will see our new parliament building. And Mr. Modi, with one act, has propelled India into the 22nd century. What is also very important is this, that in 2047, we will be celebrating 100 years of our independence. And this also will go in a long way in raising the national spirit of the country. What is very important is this, that today it is a day of pride for Indians. It is also not a coincidence whether it is abrogation of Article 370, declaring triple talaq illegal, constructing of the Bhavya Ram Mandir, bringing rights to the girl child. And I know there's a larger history and geography, but Sandeep ji, we're just going to focus today just right here, just in the moment. This is a crowning gift on the crown of India, the new Parliament building. I have full marks to our Prime Minister for having this new iconic structure. Okay, I'm just going to interrupt you for a second. There you see, this is, ladies and gentlemen, this is the front facade. Okay, so because it is triangular shaped, so you can see this is the front facade. So you can see that the pillars, the columns, go off on the two sides, and this is going to be of the multiple entryways of the three edges of the three triangles. You get a chance to go in, and as always, this is whether you want to call it a Shubh moment, there is always a monkey on hand in Parliament. If I've covered Parliament long ago, and they are famous residents of the old Parliament building. Glad to see that they've also are feeling right at home at the new Parliament building. If you are a believer of Hanuman, then that you just had a propitious sign, the first thing before the inaugural starts. Shekhar Vijayan, good morning. And plenty politics, this and all of that. Let's put it all aside today. It is a moment. It's both practical, infrastructural, and gives us, about time that this was done. Absolutely. Good morning, Rishabh. I think it's a wonderful day, a wonderful occasion. Wonderful moment. Shekhar, I'm just going to request you to come and sit in the center of the camera so that, we are just able to see you better. Yeah, perfect. You can continue the coffee. Yeah, perfect. Carry on. Yeah, thank you. It's actually chai. Yeah. So this cup of tea goes to all of you actually in the studio and everywhere else. But I think, Rishabh, I think you set the tone for the entire show and for the day. I think it's such a symbolic gesture today. Today, the 28th of May is a very, very important day, not just for Indians, but I think Indians across the world, because I think somewhere this is a pride for India. This is a moment of great honor for India. It's very symbolic, even the way the new building has been designed, its ergonomic shape, its theme, its symbol, everything has a larger purpose. And the fact that we're also invoking the blessings of God, it speaks for itself. I think forgetting the politics around this, the fact that as an Indian, we're all proud of this. As we talk, I'm getting goosebumps talking about this because there's been so much of build up to this entire day today. And today the days finally come, and knowing how the Prime Minister, he comes on time, he makes sure, it's great and grand and very symbolic. I think we're all looking forward to it. I think millions of Indians, not just India, across the world are looking at this with a lot of pride. This is something which is our very own, something which we can say that ye apna hai, because earlier it was all a vestige of the British supremacy. Somewhere this is
Apna Bharat, this is something which is very Atmanirbhar, something which is very Indian, something which you can breathe, and something which can show, like you mentioned, Rishabh, earlier in the day, something which we can show our children to. I feel, that this is what the new building looks like, and like I feel more than just being a symbol of pride, more than something which has got a very interesting theme, more than something which is very ergo. We often forget Like, that the original Parliament think, building, of course, was inaugurated as it is the Chamber of Princes in the upper house, the Viceroy's Council in the lower house, the cabinet at that point of time with the Viceroy's Privy Council. So it was when after Lutyens and Baker built it and they did the inauguration. I think Lord Irwin did it in 27, so just under 100 years ago. The conceptualization of what this was different. There was no certainty about India's independence. The best that the independence movement was certainly on, but things like the Quit India movement and all of Mahatma Gandhi, which happened much later. The Government of India Act, remember, took place in 1935. So this is preceding the Government of India Act. And the two North Block, South Block was, of course, the Viceroy Secretariat. You had the Viceregal Lodge. A lot of controversy regarding what would be done with these buildings post-independence. And a judgment call was taken that they would carry on, and they have carried on. But there was a practical infrastructural reality, and there is symbolism. I'm glad we built it. You can no penny pinching has taken place. The official costs are under 1,000 crores. Every effort was made not to build it. There were a lot of petitions in the Supreme Court trying to prevent this from happening. But you can see that pan shot on the left side of your old Parliament. And an iconic building, no doubt. But just think about it. When we have our currency notes and our future stamps and iconography, it's going to be different. Actually, the best shot of the new Parliament building is not front on. It's actually from the side. Because the front on, you just see the entry portal. You don't see the colonnade as you do of the old Parliament building, and of course the Indian flag flying there. And let's keep the shots on our screens of the new Parliament building. Joining us now on the broadcast, we have somebody who's actually built that sculpture, which you're seeing on the top of your screen. Sunil Diore is with us on the broadcast. Sunil ji, welcome. स्वागत. A very good morning to you. हमारे साथ जुड़ने के लिए आज सुबह बहुत ऐतिहासिक दिन है, and of course you've been part of it since the very beginning. रिकॉर्ड टाइम में बना दिया सर हमने ये पार्लियामेंट. क्या आप बता सकते हैं हमें कि आपका कैसे काम आपको करा, कैसे कब पता चला, कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ? ये जो look at this shot, beautiful, absolutely gorgeous. This is a new Kartavya Path. The old fountains are still there, and it's for people who are worried of how the aesthetic will look. The aesthetic is looking beautiful. Can we keep that shot on our screens, or can we get on our reporters to make the shot as we do the comparison later? Sunil ji, very good morning. आपको मैं सवाल ये कर रहा था कि आपको कैसा मौका मिला कि इतनी गति के साथ ही हम काम कर पाए, बट आइकॉनिक भी काम कर पाए. सुनील जी. मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये विश्व का वाकई में बहुत अच्छी तरह से सुंदर वास्तु रचना के हिसाब से एज एन आर्टिस्ट अंदर का सब कंपोजिटिव इसका पेंटागोनल व्यू सब दृष्टिकोण से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. इसमें वास्तु रचनाकार मतलब आर्किटेक्चरल, आर्ट डिजाइनिंग, स्कल्पचरल, ये सब स्टडी करके बहुत अच्छी तरह से बनाया गया संसद की बिल्डिंग लगती है मुझे. ओके. सुनील जी, जब आपको कब सबसे पहले पता चला, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वर अप्रोच कि ये भी एम्बलम हमने बनाना है, नए पार्लियामेंट के ऊपर चलेगा? उस टाइम जब आप डिज़ाइन कर रहे थे, जब कंस्ट्रक्शन की सोच रहे थे, उस पर क्या चैलेंजेस थे? ये मैंने 2 साल पहले एक मॉडल मंगवाया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में, जो मिस्टर संदीप नवलाखे हेड है जो टाटा तो इंजीनियरिंग कमेटी, तो उन्होंने इनवाइट किया था. फिर मेरा मॉडल अप्रूव हुआ. उसके बाद फिर मुझे काम दिया गया. फिर इसका काम हमें टारगेट दिया था 9 महीने का. इसमें चैलेंजिंग ये था कि इसमें
ये स्कल्पचर हो रहा था 9 टन का, और वहाँ जो लिफ्ट जो है वो 2 टन की थी, तो हमें सब पार्ट पार्ट में ले जाके वहाँ ज्वाइन करके उसको खड़ा करना था। तो ये पूरा सब 60 लोगों की टीम ने पूरा हेल्प से हमने उसको खड़ा किया। उसके लिए मुझे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का भी बहुत सहायता मिली, गवर्नमेंट के CPWD के लोगों का भी बहुत सहायता मिली, और अभी बहुत अच्छा लगता है कि एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का संसद है अपना हिंदुस्तान का, और उसका क्राउन मेरे हाथ से बनाया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील Okay, होता है all right. करवा। Okay, so Sunil ji, of course, this is the national emblem. It's been taken from the Ashokan pillar, Satyamev Jayate. It has the 16-spoke wheel. You have the iconography of the bull at the base, and of course the 4 lions of Sarnath. लेकिन इसकी जब डिज़ाइन करनी पड़ी, आपने स्टडी क्या करा? आपने ओरिजिनल पिलर स्टडी किया था? कैसे आपने स्टडी करा इसको फाइनल स्कल्पटिंग डिज़ाइन के लिए? ये अशोका एम्बलम जो है, एक्चुअली इसका हमने स्टडी किया, जो अशोककालीन जो ओरिजिनल है, जो इसका नियर अबाउट 3.5 फीट है, उसका स्टडी किया। लेकिन इसके पीछे हमने इसका बहुत अध्ययन किया, तो इसमें पता चला कि उस वक्त सम्राट अशोक ने जब इसका निर्माण करवाया होगा, तब उन्होंने भी बहुत सोच के ये जो 4 शेर चारों दिशा में शांति का मैसेज दे रहे इस प्रतिकृति है, और नीचे सब उसमें बुद्ध के वृषभ राशि में बुद्ध के मोटिव्स है, जैसे वृषभ राशि है, शेर है, बाद में चक्र है, Yes. बुल Yes. है, ये अपना चारों जो बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, वो Okay. सब मोटिव्स है इसका। ओके, सुनील जी, ये हम डिज़ाइन की बात कर रहे थे, बट जो आप स्टडी की बात कर रहे थे, ये आपको मोमेंट, स्कल्पचर एक बनता है, एक आइकॉनिक स्कल्पचर बनता है, क्वालिटी ऑफ स्कल्पचर बनता है, बट एक वो स्कल्पचर होता है जो आप अब सब देखेंगे परमानेंटली, ये परमानेंट शॉट बनेगा। ये आपको रियलाइजेशन कब हुआ कि देखिए ये इसकी सिग्निफिकेंस इतनी बड़ी होने वाली है? नहीं, जब इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, बाद में जब हम उसका, एक्चुअली मेरे पिताजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, तो तभी से मुझे कुछ ऐसी चीजें जानता था। पिताजी बताते थे कि गुप्तकालीन हर्षवर्धन, जैसे हमारे हिंदुस्तान में 5000 साल पहले से बुद्धिज्म के ओज, फिर हिंदू के ओज, बाद में जैन के ओज, कैसे उनका एक पीरियड हुआ है, और फिर अशोक ने अपनी लाइफ एकदम जैसे चेंज कर ली थी, एक वॉरियर एकदम कन्वर्ट हो गया शांति से। यस। और वो सब बातें इस स्तंभ में, कि अशोक चाहता था कि हिंदुस्तान ऐसा देश हो कि सब तरफ वो शांति फैलाना चाहता था, तो उसके लिए ये अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया है। तो ये काफी दिलचस्प मतलब ये बातें है, और उसके ये शिल्प द्वारा ये इसीलिए हमारा ये राष्ट्र चिन्ह है। ये मैं हमेशा देखता था कि नोट पर ये है, और कहीं गवर्नमेंट ऑफिस पे ये है, लेकिन जब मैं बनाने गया तब मुझे उसका डेप्थ और ये पता चला। ओके। और काफी मेरे कला का सराहना इससे पहले भी हुई है। 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी और अच्छा लग रहा है कि किसी एक माँ को जैसे अपना बच्चे को देख के कितना सेटिस्फेक्शन होता है, ओके, जैसे अपना स्कल्पचर को ऑलराइट। देख के भी आपका अच्छा ओके, लगता है, लोग ऑलराइट। उसको बहुत उसके बारे में। बहुत बनाई हो सुनील जी। आपका आखिरी, आपका हमारे सब भारतवासियों को संदेशा क्या है सुबह? देश के लोगों को यही मेरा मैसेज है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा
लोकतांत्रिक देश का एक उदाहरण है पूरे दुनिया के लिए, और उसको कितना आर्टिस्टिक बनाया गया है। वो आर्ट एज एन आर्टिस्ट भी उसको देखा जाए, और ये 200 साल के लिए आने वाले फ्यूचर में 200 साल ये इसका ये रहेगा, हमारे हिंदुस्तान की शान रहेगी। तो और उसमें खासियत है कि पब्लिक गैलरी के लिए भी स्पेस दिया है, Yes. इससे लोग भी वहां जा सकते चाहिए, और ये सब हो रहा है। Okay. All right. Okay, Sunil ji, बहुत बहुत बधाई आपको. That is something now we are going to never forget as you're watching cavalcades coming in. And I'm assuming, ladies and gentlemen, that looks like the cavalcade of the Prime Minister. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.